वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश फर्स्ट ईयर ग्रामर लेक्चर 1 एप्लीकेशन नंबर 2। हम देखेंगे जी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर रीएडमिशन टू कॉलेज। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, आपके पेपर में मैनी टाइम्स आ चुकी है और पिछले 10 ईयर्स में मैनी टाइम्स आपके एग्जाम का हिस्सा बन। तो हम देखेंगे ओपनिंग लाइंस में हम देखेंगे द प्रिंसिपल। अगेन हम देखेंगे प्रिंसिपल के स्पेलिंग का, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो है वो गलत लिख देते हैं। तो ये देख लें जी दोबारा से, प्रिंसिपल ये वाला जो है PLE वाला ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज सिटी ABC, अगेन वैसे ही सिटी को आप ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सब्जेक्ट मेंशन करें आप रीएडमिशन, ठीक है जी। अगेन हमारे पास रिस्पेक्टेड सर, तो ओपनिंग लाइन हमारे पास ओपनिंग जो है वो एप्लीकेशन की वो सेम ही है। अगेन हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई सबमिट दैट माय नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ द कॉलेज रूल्स ड्यू टू माय एब्सेंस फ्रॉम कॉलेज फॉर 3 वीक्स। नेक्स्ट पैराग्राफ, I am sorry that I could not inform the college office before leaving the city as I had an emergency. I received a telephone call in the evening about the heart attack of my uncle. I had to leave for Islamabad at once as there was no one else to attend on him in the hospital. Next paragraph देखेंगे, I cared for him for a week, but unfortunately, he could not survive. I had to stay a few days more in Islamabad as my father was to come from abroad for the funeral rites. Next paragraph देखेंगे, keep in view my past record and good behavior, I request you earnestly to readmit me. I assure you that in future I shall be careful. And again last में concluding, yours obediently XYZ.